Hello guys, welcome back to the channel Roadrunner 400 for a brand new episode on the wheel bend issue that we have been facing for quite some time. I may not have updated you on the issue before, पर एक बार जो है मैं बाइक को सर्विस कराने के लिए लाया था सर्विस सेंटर में और मुझे एक व्हील अलाइनमेंट करवानी थी फ्रंट व्हील की, जिसको कि सर्विस सेंटर ने मना कर दिया ये कहकर कि व्हील के अंदर एक छोटा सा बेंड है। जब मैंने फर्दर पूछा कि मैं इसका रिप्लेसमेंट कैसे ले सकता हूँ, तो उन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर सारी बात डाली कि इंश्योरेंस के अंडर ये होगा। बट व्हेन आई स्पोक टू द डीजीएम ऑफ द सर्विस सेंटर, आई वाज एबल टू स्ट्राइक अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने जो है पिक्चर्स क्लिक करी, पुणे ऑफिस में भेजा ईमेल्स के साथ। there was a lot of exchange, there was a lot of back and forth with the Pune office, but then finally the verdict came that we can avail the finance appeal under the Dominar400's 5-year warranty program, which was a great news for me. So आज हम उसी की जो है रिप्लेसमेंट करवाने के लिए लाए हैं। फ्रंट व्हील रिप्लेसमेंट के लिए सबसे पहले तो बाइक को सस्पेंड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने चेन्स वगैरह यहाँ लगा दी हैं और सस्पेंडर्स भी डाल दिए हैं। द कॉस्ट ऑफ द व्हील समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हमारा आज फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिप्लेस होगा वारंटी के अंडर। सो लेट्स सी हाउ द होल प्रोसेस गोज है। So you can clearly see in the shot that there is a wheel bend, which I think is because of a manufacturing issue and not because of a speed bump. So as you can see in this process, the front wheel of the bike has been removed from the forks and इसकी जो डिस्क प्लेट है उसको रिमूव किया जा रहा है। इसकी डिस्क प्लेट एक बार उतर जाए तो उसके बाद जो टायर है उसको पुराने रिम पे से उतार लिया जाएगा और नए रिम पे चढ़ाने के बाद उसको वापस से इंस्टॉल कर दिया जाएगा। सो गाइस, एक बात मैं आपसे दोबारा से शेयर करना चाहूँगा कि ये जो रिप्लेसमेंट है पूरी तरह से वारंटी में कवर है। बट इनिशियली जब मैंने सर्विस सेंटर से डिस्कशन स्टार्ट किया था, तब इसको उन लोगों ने एक्सीडेंट कहा था कि एक्सीडेंट की वजह से इसके अंदर बेंड है। बट क्योंकि इसके ऊपर आप कोई किसी तरीके का स्क्रैच नहीं देख सकते, तो ये इंश्योरेंस में तो कहीं से भी क्लेम नहीं मिलने वाला था, राइट। सो इस केस में मेरा मानना भी यही था कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है एंड इट हैज़ टू बी डिसॉल्व्ड इन दी वारंटी। एनीवे, सो दिस इज़ अवर न्यू रिम फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स, और इसके ऊपर हम अपना बाइक का टायर लगाने के बाद और इसको फ्रंट फोक्स के ऊपर वापस से माउंट कर देंगे एंड बाद बाइक विल बी रेडी। So finally it's time to lower down the bike, क्योंकि फ्रंट व्हील इंस्टॉल हो चुका है। The bike is ready, everything is almost done, just some general servicing is left, जो कि हर सर्विस पे होता ही है। एक नॉर्मल ECU चेक होगा, थोड़ा सा चेन सेट के अंदर जो है लुब्रिकेशन की जाएगी, व्हील अलाइनमेंट की जाएगी, एंड दैट्स प्रीटी मच इट।
There is one more important thing that I would like to bring to everyone's notice is that we often do not pay attention to what the rats are doing. As you can see, that the rats have nibbled the entire medical kit inside the bike. Now, this could be the fate of the harness, the wiring inside the bike. So, my recommendation to all the bikers out there is to make some arrangements to, keep the pests away from the important gear and machinery of your bike. So friends, that's it for today's video. I hope you liked the content. If you did, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Post in any comments if you have queries. Until the next one, peace out.